Hi everyone, in this video we are going to solve multiply two strings question of Geeks for Geeks. So as you can see, this question has come in Steam organizations such as Flipkart, Amazon, Microsoft, Adobe, Google, Facebook, etc. But this question को करने के लिए हमें अलग लैंग्वेज में सी प्लस प्लस में जावा में दूसरे मेथड होते हैं बट सिंस वी आर फोकसिंग ऑन पाइथन तो मैं आपको इसको वन लाइन में करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले दो स्ट्रिंग गिवन है। मैं ये कहूँगा कि हमें इंटीजर गिवन है स्ट्रिंग के फॉर्म में। ओके, एंड हमें उनका मल्टीप्लिकेशन लेना है। यू कैन सी S1 S2 दो स्ट्रिंग है। तो S1 में हमें देख सकते हो कि 0033 है, यहाँ पर लीडिंग जीरो या ट्रेलिंग जीरो भी हो सकता है। तो इसको अगर हम एक पल को छोड़ के स्ट्रिंग को भूल के अगर हम इंटीजर देखें तो ये 33 होता है और S2 में 2 है। 33 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 66 आंसर आएगा। ये सही है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर स्ट्रिंग को इंटीजर में टाइपकास्ट करूँगा और एक लाइन में सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। Directly we will be using return statement। सबसे पहले मैं स्ट्रिंग 1 को टाइपकास्ट करूँगा इंटीजर में, फिर स्ट्रिंग 2 को टाइपकास्ट करूँगा एंड उनका प्रोडक्ट रिटर्न करूँगा। They should work and this is the only thing which we need। As you can see, कस्टम इनपुट के लिए हमें सही आंसर आ रहा है, तो आई विल सबमिट इट नाउ एंड yeah, it's solving। As you can see, the time taken is extremely less since we are only solving it in one line। So I hope आपको ये solution, ये approach अच्छा लगेगा। If you liked it, please like the video and you can also share it with your friends। Thank you, have a nice day।